topic, which is again very important. That is enterprise value. Enterprise value. Why we are required to know about this enterprise value? Because going forward, you need to know one of the valuation methods that is known as comparative valuation method. Comparative valuation methods. Okay. Like you studied, the book value method of valuation is used in the case of amalgamation mergers and all. So again, based on the situation, and based on the industry and based on the companies, we first need to decide that which valuation method we need to apply to value the share price of any company. So under this comparative valuation methods, we have to study one of the you say valuation method, that is EV by EBITDA multiple. EV by EBITDA. Okay, EV by EBITDA multiples valuation method. Okay, so in order to know about this valuation method, okay, we should be knowing what is first enterprise value. What is the meaning of enterprise value? So suppose there is a company A, again, a very simple example, company A. Okay, now company A, uh, see company A, suppose the share price of company A, just assuming, okay, share price of company A that is currently trading in the market at rupees 30. Okay, and its number of outstanding shares. Again, share price तो you can get from the exchanges. Exchange पे आपको ये share price मिलेगा, कितने price पे वो trade कर रहा है. Okay, so this you can get from the market, real time. Okay, outstanding shares, this detail you will be finding in the financial statement of the company that you need to download from the website of that particular company A. Okay, so from there we can get the number of outstanding shares, total number of outstanding shares. Don't worry, we'll slowly come onto this enterprise value, but first you should be knowing this. So suppose total number of outstanding shares of this particular stock is 1500. Can someone tell me what will be the market capitalization of this company A? Market capitalization. Do you know the formula of market capitalization? Share Anyone? price to outstanding share. Yes, this is current market price. That is the share price. Okay. So I'm just writing CMP, current market price. Okay. Multiplied by number of outstanding shares. So after this class, I'll be giving you one homework because again, you are now getting into Excel practices and all. So today you'll have to design one model in the Excel. I'll be telling you that. Okay. So this becomes the formula of market cap. Okay. So you can just note it down somewhere in your notebook. If you are sitting with a notebook, so the formula becomes current market price multiplied by number of outstanding shares. So market cap of this company A will be 30 multiplied by this 1500. So this becomes 45,000 market capitalization. Okay. Market capitalization. So basically, can we say that this is the worth of total equity shares of the company? This is the meaning of market cap, right? Yes. Total worth of equity shares. Okay. Similarly, this company has also raised some fund from debt market. Okay, from debt market. Okay, suppose this company has raised 15,000 from debt market by issue of debentures, or they have taken loan from the bank. Okay, so total capital this company has raised till now is how much? 45,000 plus 15,000, that becomes 60,000. Yes. Okay, 60,000. Now, again think that there is a company B.
Okay. And this company B is a competitor of company A. Company A. And this company B wants to take over this company A. And this company B knows that इसका इक्विटी का वैल्यू कितना है 45,000 है एंड डिबेंचर इसके पास कितना है 15,000 है. बोथ आर इन्वेस्टर्स. दीज बोथ आर इन्वेस्टर्स. ये इक्विटी इन्वेस्टर्स है एंड ये डेट इन्वेस्टर्स है, राइट? सो इफ दिस कंपनी B wishes to buy the stake of buy this complete company A, they will have to satisfy both equity holders also and debt holders also. अगर दोनों को पैसा दे दिया तो ये कंपनी A B की हो जाएगी ना. ओके, हो जाएगी. So if we think from this point of view, if company B has to acquire and buy this company A, and they will have to make this company A as their own, they will have to pay both equity holders and debt holders, insider also, Yes, outsider sir. also, because ultimately if this B acquires A, so जो भी obligations company A का है, वो obligation अब किसका हो जाएगा? B का भी हो जाएगा, right? Right? So I'm just going to derive one formula here, enterprise value. So this is nothing but market cap plus total debt that appears in the balance sheet on the liability side, be it short-term debt and be it long-term debts, including everything. Okay, whatever kind of debt the company has. Okay, so that will give the that will give an idea that what is the total capital on which this company is running. Okay, this company has raised this much capital from the market. They have arranged, they have sourced, they have sourced this much capital from the market to run their company. Okay, and that is the enterprise value as on today. Okay, that is the enterprise value because इसी value पे वो company run कर रही है अभी. Okay, now if this company B acquires this company A के book में अगर कुछ cash दिखे तो वो cash किसका हो जाएगा? बैलेंस शीट में कैश भी तो होगा ना A के पास. सर बी का हो जाएगा. वो B का हो जाएगा. सो अल्टीमेटली थोड़ा सा कैश का फायदा भी हो जाएगा B को. तो वो कैश माइनस कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे. सो नेट टू नेट B को कितना पे करना पड़ेगा? बिकॉज उस पे तो A के पास जो भी कैश होगा बैलेंस शीट में वो B का हो जाएगा ना, राइट? समझ में आ यस रहा है? सर. यस. Just a minute. So can we remove this equal from ओके. तो मान लो कंपनी A के बैलेंस शीट पे एसेट साइड में कैश पड़ा हुआ था 3,000. ओके, 3,000 का पड़ा हुआ था. ओके, नाउ एक चीज हमेशा याद रखना, एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी. ओके. ओके, सो व्हाटएवर इज द लायबिलिटी, तो जो भी कैपिटल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ना वो दोनों को इक्वल करता है. ठीक है. ओके, अगेन यू विल गेट कंफ्यूज्ड. David, just try to understand this. सर If आपका company B आवाज acquires company A, claim होगा company B का. क्लियर नहीं आ एक रहा सर, आवाज मिनट, कट रहा है. आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, क्लियर. यस सर. अभी आवाज क्लियर है? यस सर, इट्स क्लियर. Okay. Okay, so this will become the formula of your enterprise value. But again थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं इस फॉर्मूला को. This formula is actually market cap plus debt minus cash and सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसमें भी किसका क्लेम होगा? बी का ही क्लेम हो जाएगा. तो नेट टू नेट वो फायदा हो जाता है, तो इसलिए उसको नेट माइनस कर देते हैं सिर्फ को. ओके, समझ में आ रहा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब यहाँ पे if you understood the concept of this enterprise value, this is the total capital that has been raised by any company. And if another company wants to buy this company, they will have to pay
certain amount to that company, and that amount is known as the enterprise value. Okay, so this is one of the method. Okay, now we need to know when this method is used for the valuation. When this method is used. If a see, there are three companies. अभी थोड़ी देर के लिए बी भूल जाओ कि बी ने ए को एक्वायर किया हुआ है. जस्ट अभी थोड़ी देर के लिए चलो कि देर आर थ्री कंपनीज ए बी एंड सी. सॉरी, ए बी एंड सी. तीनों का अपना कुछ एंटरप्राइज वैल्यू होगा. तीनों का एंटरप्राइज वैल्यू होगा. आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर. या, I hope all of you have access to the recorded sessions, whatever sessions are happening. Do you have link of all these recorded sessions? Yes, sir. Sir, मिल रहा है I'm ना? not able to. They will give you the link from where Okay, you sir. can all these videos. Okay. Now there are companies like company A है. Company A का जो enterprise value है, suppose that is 35,000. Okay. Company B का जो है वो somewhere around 30,000 enterprise value. Enterprise value means equity value also, debt value also. मतलब इसने इतना रेज किया हुआ है. बी ने इतना रेज किया हुआ है. सी ने सपोज मान के चलो कि ये इतना रेज किया हुआ 40,000. ओके, राइट. Just seeing these three figures of these three companies, what do you feel? Which company should perform good? किसका अर्निंग ज्यादा होना चाहिए? एंटरप्राइज वैल्यू ए की 35,000 है, बी की 30,000 है, एंड सी की 40,000 है. किसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए? बिकॉज दे हैव रेस्ड कैपिटल ना. आंसर मी प्लीज. बी को बी. व्हाई बी? दे हैव रेस्ड ओनली 30,000. Sir, C को. यस, सी को. दिस इज कॉमन सेंस ना. इसके पास ज्यादा कैपिटल है. ज्यादा कैपिटल है तो ज्यादा उसको यूज करो ना. वॉल्यूम से खेलेगा ये, राइट. बट सी ने क्या किया? सी ने जो अर्निंग दिया है ना, अर्निंग, सपोज दैट इज अराउंड 2,500 ओनली. बट बी ने ये अर्निंग बहुत अच्छा दे दिया है. बी ने 3,000 का अर्निंग दे दिया है. और ये होता है बिकॉज नॉट ऑल द कंपनीज दे परफॉर्म गुड इन द इंडस्ट्री एंड इन द मार्केट, राइट. एंड ए ने सपोज दिया है से 2,700. ओके, तो देखो, कम कैपिटल रहते हुए भी बी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया. एंड ये परफॉर्मेंस मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, क्या बोला था, इतना अर्न करके दिया, राइट. सो यू वुड बी कंसिडरिंग कि ये सर प्रॉफिट के बारे में शायद बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट हियर. व्हाट इज प्रॉफिट? यू माइट बी थिंकिंग सर इज टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट. आई एम टॉकिंग अबाउट इबिट्टा. इबिट्टा का भी मतलब वही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबिट्टा? फुल फॉर्म, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये इसका ईवी था. यहाँ पे इन तीनों कंपनीज का ईवी था. तीनों कंपनी के का इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ था सेपरेटली. और इबिट्टा जो तीनों ने कमा के दिया वो इतना दिया. अगर मल्टीपल निकालोगे ना यहाँ पे, ठीक है, ईवी बाई इबिट्टा, सो दिस विल बिकम दिस डिवाइडेड बाय दिस. ये कितना आ रहा है? 12.963. किसका अच्छा आना चाहिए एज पर यू? ये आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस. दिस इज कमिंग एज 10 एंड दिस इज कमिंग एज this divided by this. Okay. Now, what is the meaning of this ratio? जो भी आ रहा है यहाँ पे, what is the meaning of this ratio? Yeah, tell me. Try this once. The Sir, more it is good or the less it is good. sir, EV by EBITDA, Yeah. मतलब, I mean, like, I'm just trying by the way. मुझे पता Yeah. नहीं है उतना. But Mhm. EV by EBITDA बस दिखाता है कि जो प्रॉफिट अर्न किया उसका कितना टाइम्स उसका कैपिटल था, राइट. Yes. Yes. एकदम सही सोच रहे हो. अब एबिटा जितना ज्यादा होगा उतना तो अच्छा है.
उतना अच्छा है। बट मतलब सी दिस इज अ रेशियो, हाँ। राइट? दिस इज हाँ अ सर। रेशियो। हाँ सर, मतलब आपने ये इन रेशियो जितना कम या होगा वो उतना अच्छा है। या जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जो इंटरप्राइज वैल्यू है दैट इज द न्यूमरेटर, ओके, वो कम रहते हुए भी इसने ज्यादा कमा के दिया कंपनी बी ने कंपेयर टू अदर कंपनीज। ओके, ओके, इतना समझ में आया? बस इतना समझो ना कि आपने कितना कैपिटल लगाया और कितना अर्न करके दिया। द लेस इट इज ईवी बाय EBITDA, द बेटर इट इज। समझ में आ रहा है? ओके। और यही अगर रेशियो को उल्टा करते हैं, EBITDA बाय EV, तो थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए सिंपल हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज लगाया और आपने उस पे कमाया 10 रुपए, तो आपका रिटर्न परसेंटेज क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय 100, so that is around 10%, राइट? यही होता है ना? यस। तो यहाँ पे अगर ऐसे करते ना, तो अगर ऐसे भी करते हो EBITDA बाय EV, सो इस केस में कौन सा अच्छा दे रहा है आपको रिजल्ट? ऑब्वियसली बी रिजल्ट अच्छा देगा, 10% दे रहा है ना। तीनों को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सो हियर दिस विल बी गिविंग यू मैक्सिमम। ओके, बट नाउ क्वेश्चन माइट अराइज कि सर तो फिर EBITDA बाय EV करते हैं, वो ज्यादा सिंपल है। हाँ, ये क्यों आपने उल्टा क्यों कर दिया? ईवी बाई EBITDA क्यों किया? अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि इसका वैल्यूएशन में थोड़ा इम्प्लीकेशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा है आपको? ईवी का मतलब क्या है, EBITDA का मतलब क्या है? नाउ दिस particular valuation method is also used when अब EBITDA के बाद एक चीज और देखो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले होता है सेल्स, राइट? सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो? सेल्स में से व्हाट डू यू डिडक्ट? COGS। COGS माइनस करते हो तो क्या मिलता है? टेल मी। यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट, मिलता है ना? सही है, सुनो। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इफ यू डिडक्ट SG&A, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है ना, सही है, सुनो। सपोज सेल्स अर्न बाय अ कंपनी इज अराउंड, टोटल सेल्स जो सेल करके किया दैट वाज अराउंड 5 लाख। COGS जो लगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट मींस डायरेक्ट कॉस्ट, दैट वाज समवेयर अराउंड say 3 lakh. Okay, 3 lakh. So this will become your gross profit will be 5 lakh minus 3 3 lakh. लाख। Okay, और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे। ओके, सो दैट इज समवेयर अराउंड 1 lakh मान लो। ओके, सो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बिकम 2 lakh minus 1 lakh. ठीक है, and what is this operating profit I have written? This is nothing but this is your EBITDA, earning before interest, tax, depreciation and amortization. यही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज इसके बाद आप क्या डिडक्ट करते हो? इसके डेप्रिसिएशन। बाद यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन एंड amortization, दैट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? सो वो मान के चलो, वो आ गया आपका, वो आ गया, सपोज डेप्रिसिएशन आपने डेप्रिशिएट किया था 20% मान लो, so 20,000। ओके, सो आफ्टर दिस यू विल बी गेटिंग व्हाट? EBITDA में से TNA हटा दो, माइनस किया ना TNA, तो क्या बच जाएगा? EBIT बच जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये यस कितना सर। बच जाएगा? दैट विल बी दिस माइनस दिस, 80,000। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं ना डेट होल्डर्स एंड को। टैक्सेस। या फर्स्ट वी डिडक्ट इंटरेस्ट। ओके, सो इंटरेस्ट मान लो कि इंटरेस्ट कैपिटल जो आपने रेज किया था समवेयर अराउंड, आपने इस कंपनी ने रेज किया हुआ है मान लो 5 लाख कैपिटल रेज किया था। ठीक है, अब उस पे इसका ऑब्लिगेशन है हर साल इसको 10% देना है। सो 10% ऑफ दिस 5 लाख विल बिकम हाउ मच? सर 10%, या 10%। सर 50,000। तो सर आ गया 50,000 30,000। सिंपल। या सो यहाँ पे ये उनको पे कर देगा 50,000। ओके, सो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
पीबीटी आता है ना, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम दिस माइनस दिस 30,000। अब उसके बाद से इस कंपनी ने टैक्स पे कर दिया। बट अगर अब जैसे यहाँ से माइनस करेंगे ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कंपनी ने टैक्स पे किया। टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही करते हैं ना, जितना प्रॉफिट आपने कमाया है उसी पे आप टैक्स पे करेंगे। बट रुको यार। हम्म तो टैक्स सपोज पे कर दिया इस कंपनी ने, कितना पे कर दिया, 30,000। मान के चलो, एक सिचुएशन दे रहा हूँ। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, टेल मी। सर जीरो सर। कितना प्रॉफिट, यस जीरो। नो प्रॉफिट सर। तो जिस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी के पास जिस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या उस कंपनी का तुम वैल्यूएशन कर पाओगे। मान लो अगर यहाँ पे इबिट्टा ना लेके मैं यहाँ पे पीएटी ले लेता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है, देख रहे हो। और वो यस। पे करते करते कंपनी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्या हम वैल्यूएशन कर पाएंगे। नो सर। वर्स्ट केसेस में कभी कभी तो प्रॉफिट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, हम्म। तो नहीं कर पाएंगे। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड व्हाट वी डू, वी इग्नोर, यहां से लेके यहां तक इग्नोर कर देते हैं। एंड वी ट्राई टू सी दैट व्हाट इज द EBITDA जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। EBITDA जनरेटिंग यहाँ पे ये कितना जनरेट कर रही है कंपनी, तीन चार कंपनी को ले लेंगे एंड देन विल कंपेयर, जिसका EBITDA ज्यादा अच्छा है उसको हम लोग विल कंसिडर गुड। बट कभी कभी किसी केस में ना EBITDA भी नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, फिर सेल्स लेते हैं, कौन सी कंपनी अच्छा सेल्स कर रही है, तो उसके लिए एक अलग वैल्यूएशन मेथड आ जाएगा, ईवी बाय सेल्स, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स, वो भी एक वैल्यूएशन मेथड है। So you should be knowing that in what case you should be using what method of valuation. I hope this part was clear. So that is why we are taking this EBITDA. Okay. But again, be little careful. ये capital intensive company में ये valuation method use नहीं होगा। Why? Capital intensive company में valuation method use क्यों नहीं होगा? Capital intensive मतलब heavy plant and machinery वाले जो भी manufacturing plants वगैरह होते हैं ना, ओके, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज, वहां पे उनके पास क्या होता है, heavy plant and machinery वो लोग रखते हैं, तो depreciation plays an important part, so we cannot ignore this effect of depreciation, what we are ignoring here in this valuation method. Okay, depreciation plays an important part because those companies are very capital intensive. I hope this was understood to everyone. यस सर। Okay. Okay. So now we'll be moving on. If you understood the concept of EBITDA, enterprise value, formulas, and everything, so we'll be moving on the calculation part. How do we do this valuation method? Because we have got around 30 minutes, so we'll be finishing this. Okay. So just a minute. So I'm just writing सर company's name and be a little careful here. Yeah. Tell me. Yes. Tell me. सर आई हैड sir, I had a question that, Okay. sir, yesterday I was watching Shark Tank, where Mm-hmm. billionaires sit from different sectors. So, Mm-hmm. according to you, every sector has its own valuation uh, Method. formulas, Yeah. hmm, valuation methods. Mm-hmm. Yes, sir. Yes. Yes. Every sector will have its different valuation method. Again, depending over the situation, what valuation method you will be using, that depends. So going forward, you will be seeing DCF valuation method, discounted cash flow valuation method. So again, that valuation method is used when company is a very mature company. They have been in operation for quite some time and they are generating kind of very good cash flows every year. Okay. But in some of the cases, once you also start working in the industry, na, so what these modelers, financial modelers, they do, they don't depend on over one valuation method. What they do, they try to find out the value of the company, the share price of the company using all the methods. Okay. And then they will draw some plot called football field analysis. Okay. Again, they run some stats
to find out what is the median value of all these valuation methods. Okay. And based on that, they will be deciding. They also carry out some sensitivity analysis. Okay. So again, this is not sacrosanct wherein you get the exact share price that it should be trading in the market. But yes, this definitely gives us some idea. Okay. So that we can be little confident while investing. सर आई Yeah. हैव क्वेश्चन। सर अगर कोई कंपनी अब बाय करना है तो उसका एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे। हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू देखो उसका कितना एंटरप्राइज वैल्यू, बट बुक वैल्यू भी देखना। बुक वैल्यू भी बताया ना अगर ओके बाई ओके। करनी है तो, कि उसके बैलेंस शीट में उसके पास एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है, और वो भी आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, उसको एडजस्ट करो, उस पर बार्गेन करो। ये मर्चेंट बैंकर्स करते क्या है, यही तो एक्सपर्टाइज देते हैं। They will start saying that your book value is this much, your enterprise value is this much, you have not been able to produce EBITDA figure of this much, you should be producing, your competitors are giving this much, तो इतना नहीं देंगे, आपका गुडविल का वैल्यू इतना नहीं होगा। अगेन मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले, बट पहले तो कैलकुलेशन होना चाहिए ना, अब उसके बाद से निगोशिएशन स्टार्ट होता है ना। यस। So, what is the basic difference between book value and enterprise value? So book value is your total assets minus outside liability. Okay. Book value means total assets minus outside liability. Enterprise value is this market capitalization plus total debt the company has raised minus cash and cash equivalent. A kind of the Basically, total capital uh, that the company, yeah. basically, book value indicates the internal net worth of a company and enterprise value की market में उसका क्या value है। Yes, very correct, very correct. Because enterprise value में ना प्रीमियम भी आ जाता है, इसमें गुडविल ऑलरेडी एम्बेडेड है। ओके, बिकॉज मार्केट कैप में ना शेयर प्राइस वगैरह भी आ रहा है, शेयर प्राइस में जनरली फेस वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करता है, वो प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। Okay, ओके yes, sir. ओके। नाउ दिस EV EBITDA कैलकुलेशन थोड़ा वो करेंगे। सपोज देयर आर 5 कंपनीज A B C D एंड E। ये C था ना, ये कहाँ से आ गया, कंपनीज नेम, ये as written here, we are this EV by EBITDA is a part of comparative valuation method, so we'll be comparing with competitors. So that is why 5 companies I have taken, 5 companies from the same sector. Okay, this is the methodology I am giving you. Okay, so you for example, if you want to do the valuation of IT company, IT sector, so 5 IT companies you will be writing first. Okay, company's name. Now next is your share price. Okay, current share price, so I'm just writing CMP, CMP लिख लो यहाँ पे, हो जाएगा। CMP में assume price ये 12 रुपए, 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, and this is trading at 4 rupees, and this is somewhere around 8 rupees, and this is 24 rupees. Okay, 24 rupees. एक और company है, that would be better. The more company you take, the more your result will be. Okay, it will be better result. Okay, now suppose this is 30. Okay, now after CMP, in order to calculate market cap, what you need, what you require, shares outstanding. Okay, shares outstanding में ले लो, shares outstanding में
just write, just simple example. We are taking 125, 150, and take 350, then 175, then 75, and then take 100. So can you tell me what will be the market cap? What will be the market cap? So just a minute. Just multiply करते जाओ ना. Sir, तो 1500 yeah, company yes. 1080 company B, Tell me one again. one 1400 company C, Okay. Yeah. um 1400 company D, Mm-hmm. 24 into 75, Yeah. 1800 company E, and Correct. 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 1300 You are correct. company S. Yes. So this is the market cap, and this is also known as equity value. Okay. This is also known as equity value. I hope this part is clear. Okay. Now consider that net debt these companies have are 740. अब ये नेट डेट कहाँ से मिलेगा? नेट डेट कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा. ओके, सो यू विल हैव टू लिफ्ट दिस फ्रॉम द बैलेंस शीट. ओके, so net debt is somewhere around 740. Okay, just assuming figures here: 600, 414, 936, 948, and 300. Okay, cash भी लेना है, you can take cash also. Again, you will have to lift from the balance sheet. Okay, this cash figure. So I'm just ignoring because, but you should be remembering the formula is this only: market cap plus debt minus cash and cash equivalent. तो उसको ignore नहीं करना है. Okay, so let let me take cash also. Otherwise, you will say कि सर कैश तो लिया नहीं था. तो कैश ले लो. इसका कैश होगा somewhere around 50, and this is 25. 10 ले लो इसका. Yes, again take 65, and this will be 70, and this will be say 8. Okay, यहाँ पे enterprise value आ जाएगा. कैलकुलेट करो तो EV जल्दी से. कैसे होगा enterprise value? This is market cap, that is equity value, plus net debt, that is short term debt and long term debt both, minus cash and cash equivalent. So this gives you 2190. Okay, now again enterprise value you have calculated. Okay, now once you are done with the enterprise value calculation, okay, after EV what you need, EBITDA भी लेना पड़ेगा ना इसका, because we are going to do the calculation for EV by EBITDA valuation method. Okay, so EBITDA कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा. मिलेगा ना? वो लिफ्ट कर सकते हो पांचों कंपनी का, 6 कंपनीज का. Okay, suppose that EBITDA figure is 305, 220, 253, 287, कहने दो, 350, and then 400. Okay, methodology समझ में आ रही है सबको? Current market price of Wipro, for example, you will have to, okay, I'm giving you a task also parallelly. Listen to me carefully. You all will have to do the valuation of Wipro company. Okay, विप्रो के कॉम्पिटिटर्स होंगे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, and then take Mahindra. Okay, so all these companies you have to take. You have to check the current market price. You will write here their shares outstanding from the balance sheet. Then market cap is just the multiplication. You will have to write here. Net debt, again short term and long term
that you will get from the balance sheet, cash again from the asset sides, cash and cash equivalent you will get. Based on that, using the formula of EV, calculate EV, and then EBITDA from the profit and loss statement you will get. दिखाया था ना EBITDA कैसे होता है? EBITDA तुमको यहाँ से मिलेगा, वो देखना हो उसका सेल्स में से जब SNGA वाला जब निकल जाएगा ना, तो देन यू विल गेट EBITDA फिगर. सो वो वाला फिगर उठाना है आपको. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? यस सर। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, अब मेहनत करना पड़ेगा आपको. नाउ यहाँ पे EV by EBITDA we are going to calculate. EV by EBITDA निकाल लो सिंपल. EV by EBITDA फॉर्मूला लगा दो, डिविजन है ना, तो दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस. ओके, ड्रॉप कर लो यहाँ पे. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे ना यू हैव टू यूज वन फॉर्मूला, मीडियन. मीडियन ऑफ ऑल दिस वैल्यू, ये ऊपर का मीडियन लेना है यहाँ से. सबका क्या ले लो? मीडियन ले लो. यहाँ से लेके यहाँ तक मीडियन वैल्यू क्या आई? 7.41588. अब ये मीडियन, व्हाई वी आर टेकिंग मीडियन, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सी, all these companies in the same industry, they are each other's competitor, right? So as per the fair value competition concept, it is being said that all the companies will try to compete with each other, and everyone should be working efficiently in the market. That means no one should be falling behind. For example, this current market price of 12 rupees is equivalent to 9 rupees. That means it is justified. They are working to their fullest capacity. Okay, so this medium value says that the EV by EBITDA value of all these 6 companies should be this. This is the median. Okay, this is the median. That means all these 6 companies are working optimally. Okay, and all these prices are justified. None of them are overvalued and none of them are undervalued. Okay, and based on that assumption, we have got this median value. Sir, Yeah. sir, I have a question. I have a request. Please, if you could repeat that again. What is the meaning of the median value? See, median value is, see, we can take mean also. If you take mean here, mean means what? Average value. Okay, so mean will give you, what value? L4 to L9. Why this formula? Mean and average both are same, right? Right? So Yes, just sir. use average formula from here. You see, median value is little different from the mean value, that is the average value. Okay, I'm just changing one of the figures. Just observe carefully in these two figures. And this might happen in one of the year. What may happen that this EV by EBITDA multiple, if this changes to 100, see here, your median did not fluctuate more as compared to the mean. Did this fluctuate more? Median, but your mean value changed a lot. So that is a kind of outlier. Because of one of the very odd events, you'll get a wrong result. So that is why we don't take average value. We always take median value, because they did not deviate more. See here again, when this value was 7.18 as per the calculation, mean and median, there was no difference. Okay, little bit of difference. But the moment I change this to 100, see, your mean becomes 22.6135. And this will give us wrong calculation when we calculate the share price of any company. Okay, whereas median
is still somewhere near 7.4 as it was earlier. I hope this part was clear why we are taking median, why we are not taking mean. Yes, sir. Okay. Now, what I was telling you that all these 6 companies are expected to perform at par with each other. None of them will be falling behind. And that is the meaning of this median. Median of EV by EBITDA, this figure should be equal for all the companies. And they are deviating around this particular value. That is the deviation from this median value. But in the long run, they will be somewhere near to this value. Okay, so I'm just removing this mean figure, average value. Again, you will be confused. Okay, so you have calculated this one, the median figure. Okay, median figure you have calculated. Say yes or no. Yes, sir. Okay. Now you have to calculate implied enterprise value. Implied enterprise value. Okay, implied enterprise value. So we'll just make implied EV. What's the meaning of this implied EV? What is the meaning of this implied EV? This is nothing but if we put this value here, थोड़ा ध्यान से देखना. If we put this value here, what is this value? This is EV by EBITDA only. This value was EV by EBITDA. अरे ये मीडियन जो निकाला है ना यहाँ पे ये EV by Yes, sir. EBITDA Yes, ही sir. था ना. Yes, sir. If Yes, sir. if you multiply this by the EBITDA of this company, यही था ना EBITDA कंपनी A का, तो ये Yes, sir. implied enterprise value दे देगा. बट एक्चुअली में as per this calculation ये कितना आ रहा था 2190. बट implied enterprise value कितना आया 2261. 261. Yes, sir. 2261. अब इस enterprise equivalent implied EV में से if we deduct if EV. we deduct if we deduct what debt, Date. ये तो बुक में था ना उसके. हाँ, sir. हाँ, इसमें से ये माइनस कर दो नेट डेट. यही वैल्यू वो क्लेम करेंगे ना. अच्छा, वैल्यूएशन के लिए. यस, हाँ सर. कि हमारा इतना पैसा लगा हुआ है. हम्म. हाँ, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का. अब ये जो आया ये इक्विटी वैल्यू है, इसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दो. दिस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो पता है ना यहाँ पे ए का. सो दिस विल बी द एक्चुअल शेयर प्राइस दैट इट शुड बी ट्रेडिंग इन द मार्केट. कंपनी ए इस प्राइस पे, वेयर वो कितने पे ट्रेड कर रहा है 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. दैट मीन्स इट शुड बी ट्रेडिंग एट दिस. थोड़ा बहुत डिविएशन होगा एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी. That means, can we say that this particular stock is undervalued currently? यस, सर. Say yes or no. So done. This is your simple model of EV by EBITDA calculation. Just implied value यहाँ पे calculation करना है ना, ये यहाँ पे freeze करना पड़ेगा. Check the formula. This you have to freeze this one L11. So you'll be using 4. Okay. यहाँ से लेके नीचे आ जाओ. देखो इसको 6.87 पे ट्रेड करना चाहिए जबकि वो ट्रेड कर रहा है 9 रुपए पे. तो ये क्या है ओवर वैल्यूड है. ओके, इसको ट्रेड करना चाहिए 26 रुपए पे, ये ट्रेड कर रहा है 13 रुपए. हाईली अंडरवैल्यूड. यस. So this is how you calculate the valuation using comparative valuation method. This has helped you EV by EBITDA in the calculation of implied enterprise value, and that if you deduct the net debt from this value, you will get the equity value, and then divided by the number of outstanding shares, you will get the worth of the company. It's simple mathematics, nothing. It's no rocket science. I hope you will be able to calculate the values of IT companies, Infosys and all. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये सब डेटा निकालना पड़ेगा, डेटा क्रंचिंग. ओके.
So far so good everyone? Yes, समझा sir. सबको? Okay, then take care. We are done for the day. Thank you, sir. Hello, good night. Right, take care. Bye. Thank you, sir.